Hello. As you know that I am doing polity and governance previous year question from state public service commissions, okay, especially from UPPCS, Rajasthan PCS, Bihar PCS, MPPCS, etc. And we are dealing the topic Constituent Assembly and making of the Constitution. Okay, we are doing last 38 questions from these exams. Fine. This is about myself. So let's see today's questions. Okay. Which of the following statement is true? The federal form of government is in United States of America. Okay. Government of India is federal and unitary both. Government of France is of federal form. The Prime Minister of Pakistan is appointed by the people. देखिए इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यस, दिस इज करेक्ट. रेस्ट थ्री स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, we'll read here the explanation part to understand more. The government system of America is federal. The United States of America is a federal republic, consists of 50 states. However, India is a union of states and 8 union territories. Article 1 of the Indian Constitution declares as a union of states. A federal government is one in which there is division of power between the central government and state governments, but by the Constitution itself, and both operate in their respective jurisdiction independently. Some of the Constitution experts call the Indian Constitution having unitary nature because at the time of emergency it provides a strong center, but the reality is that Indian Constitution is of federal nature but some unitary feature. Okay, it's a self-explanatory. इसको मुझे नहीं लगता कुछ बताने की ज़रूरत है. So the answer is A. Next, concurrent list. Concurrent list included in Indian Constitution is given by, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा. So this concurrent list actually it has been taken from Australia. Okay, so the answer is B. The concurrent list is borrowed from the Constitution of Australia. In this list, those items are included on which both union and state have the right to make law. It is in the 7th schedule of the Constitution, which originally included 47 items, now increased to 52 items as items 11A, 17A, 17B, 20A, 33 were added through amendment. शुरू में 47 ही था, बाद में इसको 52 कर दिया गया. And these were the items which has been added by amendment. Okay, so the answer is B. Next, the idea of concurrent list in the Indian Constitution has been borrowed from. Again, same question repeat हो रहा है. देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा, हर 3 बार लगातार पूछा है, 12, 11, 12, 14 में UPPCS में. USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, USSR. ओके, ऑस्ट्रेलिया होगा इसका आंसर. ओके, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट, द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया borrowed the concept of concurrent list. कितनी बार पूछ रहा है? Describe in the 7th schedule from the concurrent list from the Constitution of Canada, ऑस्ट्रेलिया, इटली, साउथ अफ्रीका. देखिए कितनी बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. आप अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो दिस इज गोइंग टू रिमेंबर, यू आर गोइंग टू रिमेंबर फॉर लॉन्गर टाइम. सो द आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया. फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. देखिए बार बार रिपीट होने का मतलब ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस क्वेश्चन इज. ठीक है, हर स्टेट में
अलग अलग टाइम पे रिपीट हो रहा है. सो इट्स आंसर इज डी, ऑस्ट्रेलिया. या अभी चेंज हो गया. द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी in the Indian Constitution has been adopted from the Constitution of, okay, DPSP. They are asking from which constitution it has been adopted. Okay, so I think everyone knows this answer, but still I will do that. France, Ireland, Japan, USSR. Okay, so it is Ireland. Ireland से हमारा DPSP लिया गया है. The inclusion of DPSP of state policy, a directive principle of state policy in the Indian Constitution is inspired by the directive principle given in the Constitution of Ireland. These provisions are mentioned in Part 4, Article 36 to Article 51 of Constitution. ठीक है, हमारा Part 4 में दिया गया Article 36 to 51 इसके articles. The DPSP are नॉट इन्फोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ. फंडामेंटल राइट हमारा इन्फोर्सेबल होता है, ये नहीं होता है, बट प्रिंसिपल लीड डाउन देर आर कंसीडर्ड फंडामेंटल इन द गवर्नेंस. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाएगी तो DPSP को ध्यान में रख के उसको काम करना है. द कंट्री मेकिंग इन द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन द मेकिंग लॉ टू एस्टेब्लिश जस्ट सोसाइटी इन द कंट्री. ओके, सो द आंसर इज बी. फिर से आई थिंक DPSP पूछेगा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन अ सर्टेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अदर कंट्री विच कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूट टू द फ्रेमिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो इट इज़ फ्रांस, आयरलैंड, जापान, USA. सो यू नो DPSP, आयरलैंड. ओके, सो द आंसर इज बी. फिर से क्या पूछ रहा है, विल रीड. इन गिवन रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जांपल ऑफ आयरिश रिपब्लिक, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया. ओके, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा की बात बोल रहे हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट. ओके, so you know this council of state, this has been influenced from Irish Republic. Answer is A. The concept of formation of Rajya Sabha by representation to talent. देखिए अब इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, एक्सपीरियंस, ये सब कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ था? इट इज़ फ्रॉम आयरिश रिपब्लिक. ओके, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरिश रिपब्लिक. So the answer is A. Match list. Okay, feature of Indian Constitution borrowed from fundamental right, parliamentary system, emergency provision, DPSP. I think आप पिछले वीडियो देखें तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, कुछ इसमें टफ नहीं है. UK, USA, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा. देखिए US फंडामेंटल राइट USA. Okay, parliamentary system UK, emergency Germany, DPSP Ireland. Okay, so the answer is C. Simple question है. Fundamental right USA, parliamentary system UK, emergency provision Germany, Weimar Constitution, DPSP Ireland. Next, okay, constitutional provision source, fundamental right, DPSP, cabinet government, union state relation. Okay, British constitution, Canadian constitution, Irish constitution, US bill of right. देखिए इसमें फंडामेंटल राइट, इट इज US बिल ऑफ राइट, DPSP आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटिश एंड यूनियन स्टेट रिलेशन कनाडा. आंसर इज डी. ओके, सो फंडामेंटल राइट
US Bill of Right, DPSP, Irish Constitution, Cabinet Government, British Constitution, Union State Relation, Canadian Constitution. Okay.